Disability means a limitation, and accessibility means getting free of those limitations. एसेसिबिलिटी ऐसा मुद्दा है क्योंकि कोई बहुत सारे डिसेबल पर्सन ऐसे होते क्योंकि वो ऑफिस तक पहुंच ही नहीं सकते प्रॉपरली। इसकी वजह से ना वो मेन स्ट्रीम से बाहर हो जाते, कई लोगों का जॉब भी छूट जाता है। और मेरा नाम प्रवीण देशमुख। मुझे हिमोफिलिया आहे। माझं नाव सुरेंद्र शंकर बागुल। म्हणजे माझ्या दोन्ही पायांचे हाताचे ते सेप्टिकमुळेच म्हणजे पूर्ण हे झालेले आहे, सर्जरी झाल्यामुळे मला अपंगत्व आलेलं आहे. My name is Malini. I'm from Tamil Nadu. எனக்கு வந்து ரைட் ஹேண்டில் ஃபிங்கர்ஸ் கிடையாது, 4 fingers. I'm Asim Agarwal. So I'm currently working in the Godrej Capital as an HR business partner. So my disabilities went into 3 parts. One is dyslexia, dysgraphia, and dyscalculus. Hi, I'm Pushkar Pendse. I'm from Aztec Life Sciences, which is a part of Godrej Agrovet. I've not always been physically disabled. As I said, my accident took place in 2004. I had to undergo a lot of rehabilitation. I feel the group has always been trying to make an inclusive atmosphere for the disabled people, and they have provided good infrastructure for us to be able to work properly. So the basic what we have considered has to be there or must be there is first the ramp, which should have the accessibility through wheelchair, and second the handrails. Okay, these are the must to do. So while we have finalized this checklist, the lift area, which is the common passage area, which is through landlords, we have ensured to finalize those premises wherein we can have the option of audio and video, both visuals. If it is not there, we ensured while finalizing that premises or sharing that LOI to the landlord, we ensured in writing from him that it will be there installed by them. Then while we have finalized those premises, we have ensured that offices with PWD washrooms, the bigger washrooms should be allotted to the PWD individuals as per their requirements, and that should have the minimum ensured accessibility to them. Lifts, I presume, do have braille buttons, which would obviously help the visually disabled. वहाँ से हम एंट्री करते हैं ना, वहाँ पे ना जब हम आई कार्ड स्कैन करते हैं तो वहाँ पे फेस स्कैनर भी मतलब हम जाते हैं ना तो हमारा फ़ोटो खींच के जा सकते हैं। वहाँ पे हाइट में बराबर अराउंड मतलब मीडियम हाइट पे है, मतलब वो कोई भी व्हील चेयर पे भी जाके भी कर सकते हैं। கோத்ரேஜ் வந்து ட்ரீட் பண்ணுறாங்க कि எல்லா பர்சன்ஸும் ஒரே மாதிரி தான். இங்கே பிடபிள்யூ யாரும் தனித்தனி கிடையாது, சேம் எல்லாருமே ஒரே மாதிரி தான். அப்புறம் வாஷ்ரூம்ஸ் எல்லாமே நார்மலாக எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறது தான் நாங்களும் யூஸ் பண்ணுறோம். त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आम्ही जेव्हा नवीन ऑफिस बनवतोय ठाण्याला, तेव्हा ते ठाण्याचं ऑफिस सुरू नव्हतं चालत, तेव्हा आम्ही ती जी बिल्डिंग आहे ती अशी डिझाईन करतोय ती ॲसेसिबिलिटी फीचरने म्हणजे ऑलरेडी त्याच्यात अवेलेबल आहेत. तेव्हा नंतर मला ते समजलं, असं वाटलं की ही कंपनी खूप डिसेबल पर्सनपेक्षा जास्त विचार करते. आपण इथे जाणं म्हणजे माझ्यासाठी करिअरसाठी खूप चांगलं राहील. So as a designer, of accessible building is a building which is without any limitations, without any pretenses. It should be a fluidic building which can be used by the entire subset. It's a necessary, not sufficient condition to design workplaces and offices that make it easier for you to come to work. But if you stop there, it's just a few ramps and it's just, easy. It's about infrastructure. The second piece is how do you make it easier for people to succeed there? So firstly, roles that are appropriate, that can not only be done, but often be enhanced
So at Godrej Capital, I believe that we don't just work on representation, which is very, very critical, but that's not the only part of the work that we do. It's equally inclusion, which means that as we bring in each individual who has a disability, we try to ensure what is it that we can do around the person to ensure that that person reaches their potential. The better we make it accessible to them, the more they thrive. There's more diverse views that come in. Their conscious and unconscious bias that we all live with, they're all removed when you start working with such cohorts, and I think it's been an amazing journey and experience, आता इथे मी फर्स्ट टाइम मी बघितलं की हँडिकॅप मोठा आहे म्हणून, आता याच्या आधी माहितीच नव्हतं. म्हणजे ऐसे बहुत बार हुआ है कि मैं ऑफिस में आ गया मुझे और इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी, तो कंपनी ने मुझे कैब करके बुक करके कैब में बिठा के घर पे भेजा था कि प्रवीण आप आराम करो, हम देख लेंगे. तो मुझे क्या एश्योरिटी रहती है कि मुझे कंपनी मेरा ख्याल रख रही है, और एक 15 दिन में 1 महीने में कोई तो HR मेरे पास आता है और बोलते प्रवीण कैसे चल रहा है तेरा. நார்மலி நாங்கள் ரொம்ப நல்லா மஸ்தி பண்ணுவோம். பட் அந்த அவங்களாம் யாருமே என்னைய தனியாகவும் பார்த்ததில்ல. நார்மலாக என்னை எப்படி எல்லோரும் மாதிரி தான் பார்க்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்க மாட்டாங்க. நீ இவ்வளோ பண்ணியே ஆகணும், அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ப்ரெஷர்ஸும் இல்லை. நார்மல் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன். அப்புறம் எனக்கு எப்போ லீவ் வேணுமோ அந்த மாதிரி லீவும் கொடுக்குறாங்க. கம்ஃபர்டபுளான டீமில் இருக்கிறேன் நான். I can easily apply for a work from home, and the approval process is frankly just you just have to post that you are working from home and it's an automatic approval. One thing which I have particularly observed at GC is the constant efforts to integrate people with disabilities and people from LGBT community. See, results is a long run thing that will happen subsequently, but intent matters the most, and I think this place is full of it. In 2019, Godrej gave me a wonderful opportunity. They had this concept where you could put down one of your dreams on paper and publish it in front of a panel. So I had this dream of going around the periphery of India and wanted to do it solo. So through that concept, I got sponsored partially by Godrej, and I could, complete my dream to travel all through India, and it was a wonderful experience. मतलब டிசபிலிட்டி பர்சன்ஸாலையும் எல்லாம் பண்ண முடியும். நார்மல் பர்சன்ஸ் மாதிரி அவங்களாலையும் எல்லாம் பண்ண முடியும். அவங்களுக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து பார்க்கலாம். நார்மல் பர்சன்ஸ் எப்படி இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கலாம். ஸோ எல்லா கம்பெனிலையும் இந்த ரூல்ஸ் என்னால் முடிஞ்சால் கொண்டுட்டு வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணேன். बघा आता मी घरातल्या लोकांना म्हटलं का मला कार घ्यायची आहे, तर असं काही मग पॅरेंट्स म्हणतील का तू पे करशील का नाही आम्हाला माहीत नाही, तू नको घेऊ. पण ते म्हटले तू आता 3 वर्ष कंप्लीट करतोय, तू कार घे, आम्ही तुला डाऊन पेमेंटला पण मदत करतोय. एवढं कॉन्फिडन्स त्यांना आता माझ्यावर आलं आहे. मला वाटतं मी पुढे जाऊन घर पण घेऊ शकतो. लेट्स सी. मला नाही वाटत मी दुसऱ्या कुठल्या कंपनीमध्ये असतं तर मला एवढं कॉन्फिडन्स आला असता. Overall, I'd say that the Godrej Group in particular, and it's something I've learned after I came here, is that I think the general belief that the two things that are really the cornerstone of everything that we've built. One is the belief that what's good for society is inevitably and eventually good for business. And second is when you make it easier for a group of people to succeed, you make it easier for everyone and an organization or an institution to lift its game collectively.